अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो Ktrade प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं नताशा हसीफ। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो कल के पेसिमिज्म को कंटिन्यूस मार्केट ने किया है। आज के दिन भी एक फ्लैट नोट देखा गया है। ओवरऑल कल की ही एक कंटिन्यूस मोमेंटम देखी जा रही थी और स्टार्टिंग ऑफ द डे अगर आप थोड़ी सी फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर देख रहे हैं और चार्ट पे नजर डालें तो ओवरऑल स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट ने इंट्राडे लो पंच किया और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई और फाइनली उसी चेंज के ऊपर जो कल की पोजीशन थी वहीं पर आके फाइनली क्लोजर हुआ। इट मींस के फ्लैट नोट एंड है और ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं काफी हद तक कैश बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैश पे सिट कर रहे हैं। इट मींस के इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस और रिलक्टेंट दिखाई देते हैं। इस मार्केट के अंदर 44,000 के लेवल से अबव क्लोजर दिखाई देता है और साथ साथ 45,000 जब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा था तो यहाँ से एक हम कह सकते हैं टर्म ऑयल देखा जा रहा है और फाइनली अगर थोड़ा सा इस डिप के अंदर या हम कह सकते हैं थोड़ी सी इस मार्केट के नंबर्स के अंदर पैनिक ना किया जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन आ सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाईलाइट आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,833.43 के लेवल पर, हाई साइड से मार्केट गई 44,875.44, लोअर पॉज 44,275.23। आप देख सकते हैं तकरीबन 600 पॉइंट्स का इंट्राडे लो आज के दिन पंच किया गया एंड फाइनली क्लोजर 44,825.97 का, यानी कि एक माइनर से चेंज और एक फ्लैट नोट के साथ 7.46 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 254.20 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेन्स देखे जाते हैं 17.42 मिलियन शेयर्स जो है वो गेन्स देखे गए हैं एंड वैल्यू इज 7.73 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली ऑल स्क्रिप्ट आर चेंज। WTL को लीड कर रहे हैं 0.02 के गेन के साथ 2.18 पे क्लोजर, 27.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी सेकंड स्पॉट पे 0.11 का डिक्लाइन, 6.40 पे क्लोजर, 18.84 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। GGL अनचेंज 20.48 पे क्लोजर, 17.50 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट की भी पार्टिसिपेशन हो रही है और काफी एक हम कह सकते हैं नॉन इन्वेस्टर सिचुएशन है मार्केट के अंदर। अक्रॉस द बोर्ड जहां बाइंग देखी जा रही थी अब थोड़ा सा चेरी पिकिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो स्टार्टअप की दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई देता है और ओवरऑल पोजीशन स्ट्रांग दिखाई देती है। कोविड के चैलेंज होने के बावजूद या हम कह सकते हैं कोविड के क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत स्पेस क्रिएट हो गया है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हम कह सकते हैं कि फिनोमिनल परफॉर्मेंस स्टार्टअप के हवाले से देखी गई है। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको जो है वो खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रॉबिन बटलर, आप पार्टनर हैं सर्जन कैपिटल यूके के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुनव्वर साहब, आप वीपी हैं इंस्टीट्यूशन सेल्स Ktrade के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं बटलर साहब से। रॉबिन, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हियर इन माय शो। Overall, how do you think about Pakistan startup? And just introduce yourself, what you are working right now. Sure. So my name is Robin Butler from Sturgeon Capital. We're a London-based venture capital firm focused on investing in what you could broadly define as frontier and emerging markets. So we've invested heavily across Central Asia, the Middle East, and also Eastern Europe and the Caucasus as well. And what we're currently working on is our next fund, which we would like to be investing in Pakistan as well as Egypt and Bangladesh as well. So that's the reason for being here for this trip. We've been wanting to come to Pakistan for 2 or 3 months now, but work, life, and COVID kept getting in the way. But eventually decided that needed to just get on with it and come here, which I'm really glad that I have. We've arrived on Monday and been meeting with a range of different startups, investors, other people involved in the kind of startup ecosystem to try and get a better understanding of where the opportunities are in terms of verticals, in terms of stage, and therefore where we should be investing. What brings you in Pakistan actually?
Pakistan in particular. I mean, I think it's been quoted to me in pretty much every presentation I've been given since I've got here. But Pakistan's a country of 220 million people. You have high smartphone and internet penetration. You have a very young population, and what that's essentially created is the sort of the foundations or the rails on which you can build technology companies. Now, if you look at other similar markets in terms of maybe demographic and size, Indonesia being an oft-cited one. That's a country with a similar size population, but where smartphone and internet penetration came earlier. Since then, you've seen a massive sort of creation of value through startups, both for the end consumer and in terms of the actual valuation of startups themselves. Plus 40 billion, probably more like $50 billion worth of value created in startups there. I think if you look at where Pakistan is today, it's where Indonesia was five to 8 years ago. And so what we believe is that now is a very good time to be investing in startups in Pakistan to capture some of that growth as these companies expand across whether it's serving businesses or consumers in the next few years. Since COVID is there from 2 years, I guess, and startups has already created the space in Pakistan also. How do you think about the future of the startups in Pakistan? Is this growth is more than enough? Well, it's been seeing last year the uptick in interest from international investors and regional investors as well investing into Pakistan. I think prior to 2021, you had very limited activity from any investors outside of Pakistan, and very little publicity about Pakistani startups. And I think there were a few kind of legal and other reasons for that. But since last year, this massive increase of interest, I think driven largely by what I talked about, the sort of the size of the opportunity that people are seeing. But it's still really early days. I mean, there's still only these are the early days, right? And for same goes with globally. Globally, have you seen the future of startups globally? I mean, if we look at the markets where we invest, and that's broadly not dissimilar to Pakistan in terms of the kind of stage they are in their digital transformation. I think all of them are still at a very early stage. Now, somewhere like the US or Europe is obviously kind of right the other end of the spectrum. I'd say put China in that kind of bucket as well in terms of really, I'd say pushing the boundaries in terms of what you can do. The genre of business has changed now globally. Kashif साहब, आप लोग गुफ्तगू में शामिल करेंगे. Overall, जैसे कि रॉबिन ने कहा कि ग्लोबली चेंज हो गया है, एक नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गई है. क्या समझते हैं आप स्टार्टअप जैसी पोजीशंस अब देखी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर? पाकिस्तान के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया है और एक फिनोमिनल ग्रोथ भी देखी जाती है अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए ईयरली बेसिस पे. ग्रोथ तो पाकिस्तान में तो आई थिंक स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, बिकॉज पाकिस्तान में ये चीज अभी स्टार्ट हुई है और बाकी दुनिया इस चीज का फ्लेवर ऑलरेडी ले चुकी है या दे आर मतलब गोइंग टूवर्ड्स द मैच्योरिटी. लेकिन पाकिस्तान जैसी दूसरी कंट्रीज इन एशिया, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जैसे रॉबिन ने भी कहा कि यहाँ पे पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है. एंड जिस तरह अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर पूरी दुनिया को देखते हुए, तो लाइक अब ये अनटच मार्केट थी अभी तक. तो अब गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो ओनली ग्रोथ, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रोथ के अलावा बड़ी ग्रोथ स्टोरीज यहाँ पे पाकिस्तान में डिस्कवर होने की उम्मीद है. राइट. और आईटी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फ्यूचर दिखाई देता है क्योंकि ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान ने एक स्टार्ट लिया है. इट्स जस्ट ये कह सकते हैं कि मोमेंटम अभी बिल्डअप हो रहा है. बिल्कुल. तो मोमेंटम आईटी के अंदर बिल्कुल बिल्डअप हो रहा है. लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है. टेक्नोलॉजी से लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा दिन ब दिन होती चली जा रही है. और लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कंपटीशन में कहीं किसी से पीछे हैं, बिकॉज जब पोटेंशियल है तो फिर हम बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुँचेंगे. बिल्कुल. पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली लेवल जो है वो अचीव हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा. अगर कंपेयर किया जाए रीजन में, एज यू ऑलरेडी डिस्कस, रीजन में क्या दिखाई देता है? पाकिस्तान की पोजीशन, दूसरे कंट्रीज भी हैं और आईटी के ऊपर काफी काम होता है. देखें, हम लोग हर चीज में कंपैरिजन जो सबसे पहले कर रहे होते हैं दैट इज विद इंडिया. तो लाइक हमारे पास वहाँ पे आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उधर की मार्केट जो है वो बहुत मैच्योर है, जो कि पाकिस्तान में मैच्योरिटी डेवलप हो रही है. और इसी वजह से ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड द अवेयरनेस दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ. ये चीजें दोनों मिल के जो पाकिस्तान की मार्केट को बहुत आगे लेके जा सकती हैं.
और आई होप कि मतलब ये चीज़ें अच्छी चलें और आई एम श्योर कि पोटेंशियल की वजह से हम लोग बहुत जल्दी वो जो गैप है बिटवीन मैच्योरिटी एंड स्टार्टिंग के लिए, तो वो हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे। जैसे कि एक मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है ग्रोथ के अंदर। मैं बटलर से पूछती हूँ कि वो क्या कहते हैं, हाउ डू यू पोजीशन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? I mean, I think if you look at other countries in the region, I heard you mention India there. I think India is probably kind of ahead at this stage, but they have already started work in a lot of time before, I guess. So, but I don't see any reason for Pakistan not to catch up very quickly. It's this kind of idea of technological leapfrogging. So whereas in say other countries they have the kind of legacy infrastructure now out of date technologies that were installed and people have been using. If you're looking at a market such as Pakistan, actually, and a lot of other countries in the region don't have that legacy infrastructure, and that creates actually an opportunity. Until now, it's been something that may have held things back, but it actually creates an opportunity because you can leapfrog from old-fashioned, inefficient ways of doing things to a purely digital, online solution, whether that's for businesses or for consumers. And you don't have all the baggage. You don't have to worry about these kind of legacy issues. Right. I'm stopping you here. We are going for a break. एक break के जाने चलते हैं. Stay tuned. वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। काशिफ साहब मौजूद हैं, रॉबिन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। रॉबिन, जस्ट टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली स्टार्टअप्स। वी हैव द sluggish speed. Have you seen that the speed of Pakistan, is this enough or we require more speed? I mean, at the moment, no. I think the country is accelerating very quickly, and that's being driven by an increase in capital available to these startups. I mean, everyone I speak to, if you go back 5 years as a startup founder, your ability to raise capital was very limited, and without much capital, it becomes very difficult to grow and difficult to grow quickly. However, now what you're seeing with an increasing number of local venture funds and also international funds allocating to Pakistan, it's giving these startups and these founders the firepower to rather than thinking in sort of years, to thinking in weeks and in months or even in weeks. And I think that's only going to increase. And there's an abundance of capital being allocated to venture investing into startups globally, and some of that money, and an increasingly large proportion of that money is flowing into Pakistan. Right. We are talking about the capital. In 2020, Pakistani startup raised $66 million, but in 2021, Pakistan has already raised $69.2 million. Can you feel the acceleration? And I think even if you just look at what made it into the international news as being a very high-level kind of summary of what's going on, I think if you looked at 2020, there were very few kind of announcements that made it into the sort of mainstream news about startup funding in Pakistan. Last year, it seemed to be every 2 weeks, every week there was another announcement. So from that sense, really kind of felt it. And then being here on the ground as well, the discussions with founders, they don't seem to be kind of struggling to raise capital anymore. And I think looking ahead to 2022, I wouldn't be surprised if it was twice again and maybe more on terms of what was invested in 2021. Right. Just talk about government and their policies. Already government has launched a lot of policies in different sectors. How do you feel about the technology sector? Have you required any policy? Have you required any subsidies? Look, Surgeon Capital only has one investment here in Pakistan at the moment, but what I've already learned this week is that whether it's either in the financial sector with the regulators there, or in terms of the kind of the legal aspects that startups need in order to flourish, and in order to even be able to try doing what they're doing, it's clear that the government is very much moving in the right direction. I think the sort of changes in the
legal system that allowed for companies to have holding companies outside of Pakistan is crucial. And however it may appear, if for international investors, that's something that they expect, that they're used to. And if you want to encourage more of these large investment rounds in Pakistani startups, it's exactly the right thing that needed to be done. And I think that's part of what's kind of driven the improvement in investment. Right, point taken. Kashif साहब, overall दिखाई देता है कि हमें टेक्नोलॉजी जोन्स भी रिक्वायर्ड हैं. आप समझते हैं कि उस पर काम होना शुरू हो गया है? जितनी बात हो रही है कि IT पार्क्स होने चाहिए और इसमें जो है वो काम होना चाहिए, काम देर तो नहीं हो गई? देखें, नहीं, देर बिल्कुल भी नहीं हुई है, बट काम के लिए गुंजाइश बहुत है. और अब जिस तरीके से पॉलिसी सामने नजर आ रही है, आई थिंक विलिंगनेस भी मौजूद है. अच्छा, तो जब एक चीज के अंदर ग्रोथ आपको दिख रही है, लाइक जिस तरीके से बात हो रही थी पहले के लोकल इंटरनेशनल हर तरफ से हमारे पास, क्योंकि ये स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत मेजर पॉइंट होता है जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज उसके बगैर चीजें आगे चल ही नहीं सकती. तो वो अगर आपको लोकल और इंटरनेशनल दोनों साइड से आपके पास अवेलेबल हो रही है, तो उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा तेजी से आगे जाने का रूम है. क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत फ्लेवर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है और लोग बड़े फौरन से कनेक्ट हो जाते हैं. और अब हमने मार्केटिंग भी स्टार्ट देख ली है इसके अंदर कि एज बिजनेस दे आर यूजिंग इट. लेकिन अब अगर बात की जाए स्टार्टअप्स की, तो वो कितना ज़्यादा कॉमन होने वाला है? वो आने वाला टाइम ही इनका है. और इसमें पोटेंशियल बहुत है. और पोटेंशियल के साथ जो चीज़ पहले हमारे पास आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो चीज़ मिसिंग थी, वो इन्वेस्टमेंट थी. जिसकी इन्वेस्टमेंट थी तो सही मौजूद, रॉबिन ने ऑलरेडी जिक्र किया है इसका. इन्वेस्टमेंट मौजूद तो थी, बट बहुत उसका जो लेवल था वो बहुत डाउन था. लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, जो कि बोथ आपको लोकल और इंटरनेशनली दोनों मिल रहे हैं. तो वो चीज इस स्टार्टअप के प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देगी. और फिर ग्रोथ के चांसेस तो अनलिमिटेड है. Ktrade के हवाले से बताइए कि ऑब्वियसली रॉबिन और Ktrade का एक रिलेशनशिप है, तो वो मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन प्लीज आप भी बताइए इनके बारे में कुछ. आई थिंक ये अब हमारे साथ इस तरीके से, जैसे Ktrade अब स्टार्टअप्स के लिए आगे एक स्टेप अहेड आए हैं, और इन्होंने हमारे साथ आके एक पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ चीज क्रिएट की है. तो ये इस तरीके के वेंचर्स आपको आगे भी नजर आएंगे, इस तरीके की पार्टनरशिप्स आपको आगे भी नजर आएंगी, जो कि लोकल इंटरनेशनल दोनों साइड से होंगी. तो अब यहाँ पे Ktrade के हवाले से ये कि यहाँ पे फिनटेक में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक पहले हम लोग पायनियर में से हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और फिर दूसरों के साथ जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद हो रही है, जो कि लाइक लोकल इंटरनेशनल दोनों साइड से हमें मिल रही है, तो फिर हमारी जो स्पीड है वो आगे, हम लोग पायनियर्स हैं तो लीड करेंगे लोगों को. राइट. अच्छा, लोगों को लीड करना और ऑब्वियसली कैपिटल रिक्वायर्ड जैसे कि ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अंदर अब इस चीज़ पे काम भी हो रहा है. आप समझ रहे हैं एकेडमिकली इतना काम हो चुका है पहले कि वो स्टूडेंट्स, वो न्यू जो ट्रेनर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा रेडी होते हैं कि अब वो IT बिजनेसेस में आ सकें? लाइक इसमें देखिए, हमें कंपेयर करना चाहिए कि हम आज से 4 साल या 5 साल पहले कहाँ पे खड़े हुए थे और आज कहाँ पे मौजूद हैं. तो 5 साल पहले जो जिस तरह आप यंगस्टर्स की बात कर रही हैं, जो पहले लोग निकलते थे, उनको आइडिया इतना ज्यादा इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होता था. लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक माइंडसेट उनका क्रिएट हुआ है, दो कि उनका इंटरेस्ट इस तरफ कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज या कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अभी भी थोड़ा सा लिमिटेड है. बट जब उनको अट्रैक्शन मिलेगी तो ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ रही है. राइट, awareness बढ़ गई है. Robin, how do you feel about Pakistan? How do you position Pakistan in this region as compared to other countries, India, China, about the training, about the ecosystem? I think it's fair to say that Pakistan is still relatively early stage in that in terms of the kind of the development of the ecosystem, and the ecosystem is more than just the sort of the startups and the investors. It's the kind of lawyers, it's the advisors, it's the accountants. It's that whole ecosystem being exactly the right word that exists to support founders, and I think it makes the job of a founder in Pakistan or in other emerging markets much more difficult. If you're in the US and you want to found a startup, you can basically outsource everything. You can find other companies that will support you with this. So you can just focus on
the problem that you really want to solve. But actually in Pakistan it's much more difficult because there probably isn't someone you can rely on to solve that problem for you. So you've got to solve it for yourself. Now, in the beginning that can make life more difficult, but ultimately what I think is quite interesting and quite exciting is if you build the solution to multiple different problems, is actually you become a much bigger company. So rather than being focused on one specific thing, you solve a whole suite of problems. And in a way, you're talking about basic necessities. Yeah, no, this is. I mean, it's for any technology company. There are various tools, various things that you need to plug into, that you need to rely on, that don't necessarily exist in the same way in Pakistan as they do elsewhere. So I think it's a challenge in the beginning, but it also creates opportunities going forward. Right. Can you explain the relationship with Ktrade? How do you find it? No, so Surgeon Capital invested in Ktrade a couple of years ago, and for us it's a really interesting opportunity. I think in pretty much any market which you look at, whether developed or emerging, that you've seen the rise of these sort of Robin Hood type apps, so opening up access to investing for everyone. Rather historically, opening an account, brokerage account to trade stocks and shares anywhere was difficult. In Pakistan, I can only imagine how challenging it was. But by democratizing that asset, the access to investing, you can really open up and have a significant positive impact across the population in terms of giving people somewhere to invest their money, to generate a return, to create savings. And I think if you look at Pakistan at the moment, it's still pretty relatively small, the stock market and the trading volumes. We're seeing them increasing over the last couple of years, and I think by opening up access to far more people, and hopefully I think as things progress and more companies are listed, and maybe some technology companies as well, that will therefore I think Ktrade can really be at the front of that. Yeah, Ktrade is performing a phenomenal job. How do you position Ktrade in a fintech company? What sort of versus the other kind of fintech companies? Well, I think if you look at the sort of fintech space, you've got a range of different problems that people are trying to solve. You have a range of businesses that are trying to provide access to sort of basic financial services, i.e. kind of bank accounts, credit for consumers. You have people doing the same for businesses, and I think Ktrade operates in a slightly different kind of niche. It's giving people the ability to invest their money in a way that they haven't previously. Previously, they may have held it in cash or in the bank or bought land or property. Whereas when money actually flows into the stock market, it gives them an opportunity to earn a meaningful return, a return that may be above the rate of inflation and above the rate that they would get in a bank. So that's where I think I see it sits, and it's a very exciting space. राइट Ktrade के हवाले से बात करें काशिफ साहब, स्टार्टअप्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर Ktrade एक बहुत ज़बरदस्त फिनटेक की जो कंपनीज देखी जाए तो इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में और भी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, या Ktrade इटसेल्फ एक फर्स्ट कंपनी है? Ktrade आई थिंक पायनियर्स हैं. राइट. लेकिन पायनियर्स को सबसे ज़्यादा जो फायदा कमाने वाले लोग होते हैं वो भी पायनियर्स भी होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर आप देखें. और हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आई थिंक के लोगों के अंदर, मैं वही फिर दोबारा बात करूँगा कि अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग आएंगे, एक स्टेप आगे भी आएंगे. लेकिन जिस तरीके से अभी काम हो रहा है, आई थिंक लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, और इन फ्यूचर आप और दूसरी कंपनीज को भी देखेंगे कि वो भी आगे स्टार्टअप्स के लिए फिनटेक के अंदर काम कर रहे होंगे. राइट. हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्चुअली वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें स्टार्टअप्स के अंदर तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से Ktrade की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए? देखिए, Ktrade आई थिंक के जो एक्सपीरियंस एज एन इन्वेस्टर दे सकते हैं आपको. रॉबिन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से व्हाट हिज एक्सपीरियंस इज विद Ktrade. और लेकिन ये कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने माइंड को क्लियर करके आगे आए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ह्यूज है. तो कोई छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो जब इन्वेस्टमेंट ह्यूज होती है, आपके पास इन्वेस्टर अवेलेबल होता है, लाइक वो इन्वेस्टर चाहे लोकल हो या फॉरेन हो, बट उसके लिए लेके चलना चीज़ को वो बिल्कुल पैटर्न सेम होगा. और जिस तरीके से आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं देख रहा हूँ, तो हमारे पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही हैं इन स्टार्टअप्स, तो वो आपको गोइंग फॉरवर्ड मजीद बढ़ती हुई ही नजर आएंगी. राइट.
वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। और अभी जो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है या इन्वेस्टर, आपने अवेयरनेस की बात की है, वो इन्वेस्टर्स जिनके पास अवेयरनेस भी है और वो जानते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, अभी अगर टैप कर लिया जाए मार्केट को तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वो कैसे दिखाई देते हैं आपको? कितने इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में? आई थिंक बिल्कुल लोग दे आर कमिंग वन स्टेप अहेड, और आगे आके लोग जो पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ये चीजें पहले नहीं नजर आ रही थी, जो अब नजर आ रही हैं। और मार्केट जो है वो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये मार्केट अनटच्ड है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो उस पोटेंशियल को आपको अगर कैटर करना होगा कि जो यहाँ पे स्टार्टअप की ग्रोथ आपको नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर, तो उस चीज के लिए अवेयरनेस का होना बड़ा जरूरी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। एंड आई थिंक फिनोमिनल ग्रोथ आपको आने वाले सालों में नियर फ्यूचर आपको नजर आएगी। न्यू फ्यूचर आपका फिनोमिनल ग्रोथ हम देख सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें और थोड़ा सा स्टार्टअप से हटके अगर आप के ट्रेड की जो क्लाइंट्स हैं उनकी बात की जाए, कितने क्लाइंट्स अब आपको दिख रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस रखते हैं? स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस अभी मेरे हिसाब से कम है, लेकिन इट्स गोइंग अपवर्ड। और क्योंकि के ट्रेड की काविशें एक तरफ हैं, बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा है। और अब मुझे ये चीज मैं देख रहा हूँ कि अब हम लोगों ने जिस तरीके से के ट्रेड में यहाँ पे चीजें स्टार्ट की थी, अब वो चीजें दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं, जिसका फायदा पूरी मार्केट को और मार्केट में काम करने वाले लोगों को एज अ होल सब लोगों को मिल रहा है। क्योंकि जितने, अगर हम थोड़ा सा आईटी के ऊपर ही आज फोकस दें और आईटी कंपनीज की ही बात करें, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर अभी कम कंपनीज थी, लेकिन न्यू कंपनीज आ रही हैं। तो आप समझते हैं न्यू जो कंपनीज आ रही हैं, जेम बोर्ड हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, बड़े ही एक फिनोमिनल ऑप्शन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, कितना फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है और कितनी आईटी कंपनीज जो है वो लिस्टेड होने जा रही है नेक्स्ट ईयर? आईटी कंपनीज देखें पाइपलाइन में तो हैं जो लिस्टेड होने के लिए जा रही हैं, बट ये कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं आईटी कंपनीज, उसके अंदर भी आप देखें तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी लोगों का बहुत डेवलप हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और पिछले दिनों में अगर आप मतलब पिछले 6 महीने में या 8 महीने अगर ट्रेंड देखें कि वॉल्यूम लीडर्स बन रही हैं आईटी कंपनीज, तो लोग काम करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, लोगों को चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, तो लोग वो सेक्टर जो कि पहले इग्नोर था, अब वॉल्यूम वाइज मार्केट लीडर बन रहे हैं। अच्छा, रॉबिन ने कुछ जिक्र किया, एक कंपैरिजन दिया कि अगर यूके में कोई बिजनेस लगाना हो, स्टार्टअप करना हो, तो वहाँ पे कुछ चीजें आउटसोर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में करना हो तो देयर आर सम चैलेंजेस। तो अगर कोई न्यू जो बिजनेस न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो वो क्या चैलेंजेस हैं जिनको अभी पहले ही देख लें? मैं रॉबिन से ही पूछूंगी, लेकिन आपसे चैलेंजेस तो हैं अभी, क्योंकि देखें हम इनिशियल स्टेज पे हैं और चैलेंजेस तो आपको अभी नजर आएंगे और आगे मतलब आगे आने वाले टाइम पे ये चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इन चीजों पे फोकस है इस वक्त राइट नाउ आईटी सेक्टर पे स्पेसिफिकली, तो वो आपको गोइंग फॉरवर्ड आपको चैलेंजेस कम ही होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो नए आने वालों के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, चैलेंजेस कम होंगे, अब बढ़ेंगे। हाँ। तो अब नए आने वाले लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईटी सेक्टर। Since it's already initiative of Prime Minister Saab, Robin, can you tell me, already you have pointed out the challenges, some challenges you have already faced in the start of the beginning of the business. How do you advise the investor? How do you advise the startup investor to cope up with these challenges? I think you've discussed that. I mean, these challenges will go down over time. I think it's if you look at where the market is today, it's still very early stages, and a lot of the challenges are kind of infrastructure related. It's kind of personnel related, being able to hire the right people you need, having the correct sort of back-end infrastructure, if you like, for startups to build. Now, as an investor, what you have to do in that case is keep that in mind. I mean, these challenges will slow down the growth of some of the startups,
It's not to say that they won't become much bigger in the future, but they will mean that rather than maybe being able to do things in 6 months, maybe it takes a year, whether that's because of not being able to hire the people they need or not being able to sort of access a product or a service that they need. Now it's nothing terminal for a business. That's the nature of building these startups, and is something to be expected. But as an investor, you have to be aware of that, and don't commit to investing in a startup at a valuation which prices. You need to price the startup. How do you find where the it looks Pakistani today. startups? Have you experienced or met them or? Yeah, I think I've had nearly 20 meetings already since arriving here on Monday. So, Wow. so I've been trying to meet with as many as possible, and I think by and large been very impressed by the quality of the founders. I think what's interesting and what's encouraging is they're really focusing on I think key problems that need to be solved, and that for us is very important. And I think should be for any investor is really making sure that the founder has identified the problem that they want to solve. They understand the issues that relate to it, and that their solution is built in the context of that, i.e. they spend time with their customers, they spend time with the end users of their product to understand that what they're building is the right solution, rather than just building it on their own and thinking, well, there's this problem, I'm going to solve it by doing this. Usually what happens when you bring the solution over here is it doesn't work. People don't use it how you think they're going to use it, they don't like it. So you need to build something kind of in conversation with your end customer, and that's something which from the meetings this week, that the founders that really stand out are the ones who can succinctly and clearly explain what the problem is and how their solution solves for it. Right. Since there's a big room in this business, how do you feel about the market of Pakistan? Is it sustainable? Do you find that? I think so. I mean, I think you have different. It depends on what business model you're going for. I think particularly in the B2B space, the sort of business to business space, I think there's a huge amount of opportunity there. There's a lot of industry here. There's a lot of business that goes on here, whether you're catering to large enterprises or to small and medium-sized businesses. There's a huge number of these sort of Kirana stores. There's a huge number of these kind of smaller retailers that you can provide services for, and who I guess have the kind of willingness and ability to pay. And I've met a lot of companies that are trying to solve in that space. Some very talented founders as well. And then you kind of, that's on one hand, and on the other hand you have the sort of B2C, for the kind of products for the consumer. And I think that's a space that will take a little bit longer to sort of to catch up. I think you need to educate your end user in the sort of service or the solution that you're providing to them. But it's something that's been massively accelerated by COVID. Things of the acceleration of e-commerce and the use of technology was massive during COVID because it had to be. You couldn't go to do something. Robin, apart from startups, can you tell us about the emerging market and frontier market after COVID? What are the situation actually? I'd say by and large, sort of been traveling quite a lot over the past 12 months, sort of during COVID and as COVID has died down. And by and large, most countries have sort of essentially gone back to normal, and maybe it's a difference between frontier and emerging markets and more developed markets is there aren't the same kind of support mechanisms like say you have in the UK that meant that people could be told not to go to work. You can't really do that in frontier and emerging markets. People need to go to work, they want to go to work, and so there's been a kind of different response to COVID, and ultimately I think kind of being here this week, I was in Egypt before Christmas. I've been in Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia. All these countries, by and large, have I think sort of handled it pretty well. Life is going back to normal, and I think from an economic perspective, we want normal life actually. Yeah, we don't want COVID. We classify first time in emerging market in 2008. Second time we reclassify in 2017, I guess. What do you think about Pakistan? What are the position have you seen in emerging market that already we have exit that emerging market and reclassify in frontier market? I think the whole sort of frontier versus emerging kind of definition though is a kind of that isn't necessarily one that really makes sense. I think you have countries that are in the emerging bracket that really could be in the frontier, and the same that countries in the frontier that could be in the emerging. So certainly from our perspective as investors, it's not something we really pay attention to. We look at the kind of the opportunity, the state of the kind of where the country is in its digital transformation, and I think in the kind of private investment space for venture investors and the like,
that is really where they'll focus. I guess on the public market side, it makes more of a difference because you have sort of inflows and outflows of capital depending on which bucket a country falls into, and that does have an impact. But I'm a little bit skeptical on the whole sort of. We are actually cheapest market in the region whole. Kashif, please comment करें कि overall जो पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान की प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी चीप दिखाई देती है और हम 5 to 6% के जीबी पे उससे दिखाई देते हैं हम पीई पे. ओवरऑल अब जबकि इतनी ज़बरदस्त पोजीशन दिखाई देती है तो क्यों हम मिस कर जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स? देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स डिपेंड करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं कौन. बिकॉज अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर 2022 हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है, दोबारा नंबर पॉजिटिव साइड पे गए हैं. तो इट्स नॉट ओनली दैट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठीक है, नेट हम अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे पास सेलर ही हैं पिछले 1-2-4 सालों से. बट आप देखें कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मल्टीपल सिर्फ लोकल इन्वेस्टर को नहीं सभी लोगों के लिए नजर आते हैं. और वो मल्टीपल्स अगर चीप हैं उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि उनका आगे गोइंग फॉरवर्ड उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे कितना ट्रस्ट आ रहा है. आपको नजर आते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल आ रहा है. और नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स का भी आ रहा है, जो कि अब आपको चीजें यहाँ से जो गोइंग फॉरवर्ड अब एंड जनवरी टिल द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर आपको नजर आएगा कि नंबर्स पॉजिटिव होंगे और चीजें बेहतर चलना शुरू होंगी. वॉल्यूम वाइज, वैल्यू वाइज दोनों तरीकों से आपको सही नजर आएंगी. राइट. और अगर आपसे बात की जाए कि 2022 का ट्रेंड क्या देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, क्योंकि 2021 को थोड़ा सा कंपेयर किया जाए पूरी दुनिया से तो एक अच्छी ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर दिखती है. 2022 में ग्रोथ आई थिंक पोटेंशियल मुझे तो बहुत नजर आ रही है कि है मौजूद और ग्रोथ आएगी भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप देखें पिछला पूरा साल हमारा कोविड की वजह से ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब रहा. उसके बाद भी हमने जो ग्रोथ शो की है वो इनिशियली तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे. और अब जब सिर्फ मार्केट को ही देखना तो नहीं कर रहे थे. बिल्कुल. तो अब जब यहाँ पे चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं 2022, तो मेरे ख्याल में जो ग्रोथ है वो आई थिंक पिछले साल से बेहतर होगी. पिछले साल से बेहतर होगी. और अगर जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कमेंट किया जाए तो कितनी फोरकास्ट जो है वो दिखाई देती है? ऑलरेडी 5% पे तो है ही फोरकास्ट. हाँ, लेकिन ये कि हम अगर अच्छी बात ये होगी कि हम अपनी फोरकास्ट को मीट करें, टारगेट्स मीट करें. बिल्कुल हमारे लिए अच्छा यही होगा. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हाई टारगेट, अगर हम अपनी फोरकास्ट को मीट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए, क्योंकि ये चीजें जो है वो आप इसको टारगेट नहीं कर सकते विद इन 6 months टाइम या विद इन 1 year टाइम. ये गोइंग आपको एक लॉन्गर रन में इसको प्लान करना पड़ता है. तो अगर हम आज अपने टारगेट्स मीट करने की बात करेंगे तो एक साल टारगेट मीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग के टारगेट होंगे कि हमें अपने टारगेट को एक्सीड करना है. राइट, टारगेट को एक्सीड करना है. Robin, there is a room for such amazing growth. Actually, a substantial growth we have achieved in 2020 and 2021. What do you forecast the Pakistani startups growth in 2022? How do you see the trend? How do you see the limitations? I mean, I think if you look at if you think about startups growth, there are various ways to judge it, but a simplistic metric would be the kind of valuations and the amount of capital that they've raised. Now, if you look at last year was the first time you've seen a significant number of significant, say around Series A investments, and these companies raising tens of millions of dollars. And I think during the next 12 months, you'll have several of those companies going on to raise much larger rounds in the hundreds of millions of dollars. Now, that is going to be at higher valuations. I think we may well see the first sort of unicorn coming out of sort of homegrown unicorn coming out of Pakistan, and with that sort of larger amount of capital and valuation, it is indicative of increased growth within the sort of startup ecosystem here in Pakistan. वैल्यूएशन का जिक्र हो रहा है तो रुपीस और कमोडिटीज के फॉरेक्स रिजर्व्स देखते चलते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,030 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,838.73. ऑयल WTI पर बैरल $86.52. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $87.89.
Currencies में सबसे पहले यूरो buying रही 199.70, selling was 201.70. UK pound buying रही 238.75, selling was 241.25. US dollar buying रही 176.90, selling was 178.10. Chinese yuan buying at 23.50, selling was 23.90. Saudi Riyal buying at 46.55, selling was 47.10. UAE dirham buying at 48.15, selling was 48.65. Kuwaiti dinar buying at 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying at 392.75, selling was 394.78. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. ओवरऑल इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस काफी हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, $87 to $88. इट मीन्स के ओवरऑल काफी हद तक जो है वो एक कमोडिटी मार्केट के लिए इंटरनेशनली लोकली एक मुश्किल सिचुएशन दिखाई देती है. काशिफ से पूछते हैं कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर. प्लीज काशिफ, लास्ट कमेंट. इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस तो ऊपर जा रही हैं, बट इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं. लाइक अभी हमने कुछ अर्से पहले वो अबू धाबी वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद प्राइसेस के अंदर, ऑयल प्राइसेस के अंदर हमने एक जंप देखा. राइट. तो ठीक है, ऑयल प्राइसेस राइजिंग तो ट्रेंड इनका बना हुआ है, बट आई थिंक ये लॉन्गर रन में आपको ऑयल प्राइसेस नीचे मिलेंगी. और तो मतलब ये वो ट्रेंड नहीं है जो कि कंटिन्यू करे और उसके बाद ऑयल प्राइसेस आपको $100 से भी ऊपर चली जाएं. इतनी अभी लाइक राइजिंग ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, बट इतना ज्यादा हाई प्राइस के अंदर अब मैं यहाँ से मजीद और नहीं देखता. राइट. तो मुझे फीलिंग जो है वो जो मैं जिस तरीके से फोकस कर रहा हूँ चीज़ों को, आई थिंक ऑयल प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ऊपर जाने की गुंजाइश है, बट आई थिंक ये नीचे भी आपको मिलेंगी अगर आप इसको टारगेट करें इन सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर. Right. Robin, on a lighter note, since you are guest here in Pakistan, how do you feel about Pakistan, Pakistani people? Have you tried any food? I have. I mean, I've had an incredibly warm welcome since I came here. I put up something on LinkedIn on Saturday last week saying that I was coming to Pakistan, and I went out for the morning and I came back and my phone had exploded with messages and connections and things, and people have been incredibly welcoming, offering sort of look after me and take care of me at every point. So I feel very welcome, and I've had an enjoyable time so far. But yeah, I've tried a few things, sort of some biryani, some barbecue, but open biryani, to barbecue, and I'm open to any other suggestions you have. Yeah. What would you recommend? You can try a lot of sweet dish, mithai. Yeah. Mithai. Okay. गुलाब जामुन. Yeah. चलें जी, थैंक यू सो मच. काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया. रॉबिन, थैंक यू सो मच, यू आर हियर. ओवरऑल स्टार्टअप्स के बारे में आज हमने डिस्कशन की और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जैसे ये पोजीशन या जैसे ये स्पीड दिखाई दे रही है, यही मोमेंटम अगर थोड़ा सा और फास्ट पेस के साथ दिखाई दे तो काफी चीजें बेहतर हो सकती है. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.